which we have discussed about the amphotericin B today. You can see here the structure of amphotericin B. It is the 38 member macrocyclic compound. It means it contains the 38 members. Suppose that you can start the numbering from this position. This one the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 पर क्या है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, राइट. एंड 17, 18, 19 पर आपका जो पोजीशन है यहाँ पर ये मालिक्यूल्स, शुगर मालिक्यूल्स अटैच है ना. इन विच कंटेन द वेरियस हाइड्रोक्सी ग्रुप, मिथाइल ग्रुप्स एंड वन इम्पॉर्टेंट ग्रुप बेसिक कैरेक्टर्स जो शो करता है एम्फोटेरिसिन बी, दैट इज द NH3+, राइट. इसमें जो है डबल बॉन्डेड है हेप्टाइन, जिससे सपोज दैट दिस वन द one double bond, this one the two double bond, right, and the 3, 4, 5, 6 and 7. So amphotericin B is containing the how many double bond, that is the 7 double bond. So this drug is the heptaine. So amphotericin B is an antibiotic drug, right. So amphotericin B and nystatin, natamycin, these drugs are used for treating the systemic and superficial infection. Antibiotic category में आता है, right. And it also called amphotericin B, means amphotericin amphoteric nature का होता है, means it contain the anionic and cationic form, right. कार्बोक्सिलिक एसिड और बेसिक कैरेक्टर दोनों है इसमें, इसलिए इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक. सो दिस ड्रग इज द एम्फोटेरिसिन बी. सो देयर आर वेरियस मेंबर्ड लाइक 26 मेंबरिंग पालीन्स. सो देयर आर 7 ins in this drug. So that is why it's called polyins. So amphotericin B is also called polyins because of that it has 7 in, means double bonded. And similarly there are some other polyins like natamycin. It contains the 26 membered natamycin, and nystatin and amphotericin B are 38 membered macrocyclic, right. So in the chemistry of amphotericin B you can see here various hydroxy group attached, right. You can see here the hydroxy group, this group, the polar in nature, right. So this series of hydroxy group on the acid dry portion of the ring, means this on the acid portion. So in this portion there are various hydroxy groups are attached, and this region is non-polar region, right. This region is the non-polar region, right. Non-polar means it have the hydrophobic character. So hydrophobic character is important for this drug because of that it bind with the polyins. This bind the ergosterol in the fungal cell membrane, right. ergosterol होता है उसमें पॉलीमेम्ब्रेन जो है उसके साथ ही बाइंड होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ. सो दिस लाइपोफिलिक पोर्शंस ऑफ पॉलीन्स बाइंड विद द ergosterol. सिमिलरली हियर द पोलर रीजन, दिस पोलर रीजन्स also produce the hydrophilic portion of drug, and result this region what result in the cell leakage in the cell membranes. So this is the general structure of amphotericin B. It has 2 pK value. It has 2 pK value. One due to the presence of this carboxylic group, right? And second, this one the amine functional group. This amine functional group have the pK value 10, and similarly for the carboxylic group its pK value is the 5.7. So due to this character it called the amphoteric character. So this drug is called amphotericin B.
right? So amino group attached to the sugar, है ना, जैसे मैक्रोलाइड्स 38 मेंबर्ड मैक्रोलाइड्स, सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैक्रोलाइड्स कितने मेंबर्ड होते हैं एम्फोटेरिसिन बी में, तो आंसर इज 38 मेंबर्ड मैक्रोलाइड्स, दैट इज एम्फोटेरिसिन बी, राइट? And these sugar molecules bind with this linkage, that is the called glycosidic linkage. It obtains the soils culture of the actinomycete, streptomyces nodosus, right? And you can see it isolate in the different mixture of two compounds, amphotericin B and amphotericin A, right? In A and B, so compound B have the more active as compared to the amphotericin A, so it further used for the clinical practice, जैसे एम्फोटेरिसिन बी, राइट? अगर हम इसकी एक्टिविटी की बात करें तो एम्फोटेरिसिन बी हैव द फंगीस्टेटिक्स एंड फंगीसाइडल एक्टिविटी, सो डिपेंडिंग ऑन द डोज पर डिपेंड करता है कि फंगोस्टेटिक है या फंजाइसाइडल है, राइट? So amphotericin B already due to the primary amines and that is the mycosamine. इस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? mycosamine. This ring is called mycosamine and it contain the amino group, right? This is the NH3 form में है ये amino group, right? So amphotericin B form the salt with the both acid and base. यहाँ से भी आपको salt बना सकता है और एसिड से भी ये साल्ट फॉर्म में बना सकता है। तो आपको पता है साल्ट फॉर्म हाईली स्टेबल होता है, और एम्फोटेरिसिन बी का जो साल्ट होता है ये डीप येलो क्रिस्टल फॉर्म होता है और स्प्रिंगली सॉल्युबल्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट? सो ड्यू टू द लाइपोफिलिक कैरेक्टर्स इंट्राथिकली इसको यूज किया जाता है फॉर द फंगल इंफेक्शन, ना, राइट? एडवर्स इफेक्ट की हम बात करें तो इट हैव द सेवियर टॉक्सिसिटी लाइक किडनी टॉक्सिसिटी एंड सो दिस इज द बिकॉज ऑफ दैट समटाइम इट आल्सो ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लाइक फीवर, सेकिंग, चिल्स, हाइपोटेंशन एक्सेट्रा। फॉर्मुलेशन की बात करें तो एम्फोटेरिसिन बी जो है ये लाइपोसोमल इनकैप्सुलेशन एंड लिपिड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, राइट? एंड दिस ड्रग there are various newer formulation also available for amphotericin B, right? So this is the broad spectrum of antifungal activity also. So right, mode of action की बात स्टीरॉल से बाइंड होता है ना, जो मेम्ब्रेन होता है सेंसिटिव मेम्ब्रेन उसके जो है सेलुलर मेम्ब्रेन के एर्गोस्टेरॉल से बाइंड होगा, resulting reaction make pore in the membrane and increase the permeability of the membrane to the small molecules. Then what happened? The reduction the function of membrane as an osmotic barrier, right? And the organism will kill, right? So next property of this drug is that at physiological pH it exists as a deuter ion in the aqueous solution due to the presence of this particular anionic and cationic. So this compound shows the deuter ionic character in aqueous solution. The important property of this drug. And you can see here 7 conjugated double bond in amphotericin B. So it prone to the oxidation easily because of that this double bond. And the amphotericin B is stored between the 2 and 8 degrees Celsius. Because of that, because of it unstable due to it oxidized due to the presence of the conjugation double bond. इसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है, इसलिए इसको लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है इन एयर टाइट कंटेनर एंड आल्सो प्रोटेक्टेड द लाइट, राइट? सो इन एक्वस सोल्यूशन एम्फोटेरिसिन बी इज इनएक्टिवेटेड ड्यू टू द pH due to the hydrolysis of glycosidic linkage. So this particular site may be hydrolyzed, right, in the presence of extreme pH due to the hydrolysis. So this drug also had the
octanol water partition coefficient. This is the high octanol water partition coefficient means partition उसका ज़्यादा होगा, means this character is a highly hydrophobic in nature due to the octanol water partition. Amphotericin B is a surface active molecules. This one the surface active molecules because of it had the hydrophilic due to the presence of hydroxy group. This hydroxy group produce the hydrophilic characters in the molecules, and polyhydroxy you can see this is the macrolides ring in which amino sugars are attached. This is the amino sugar in attach होता है इसमें, and it produce the hydrophilic characters. Similarly, heptadines which are in conjugation form, this one the in conjugation form, so this is the produce the what hydrophobic characters. So ring, this region will produce the hydrophobic, which I already told you, right? So this is the all about the your chemistry and structure of amphotericin B. Thank you.